अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को प्रेस करने मत भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करिएगा। आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल फॉर मेकअप बिगनर्स के लिए। स्पेशली पूरा इसे ध्यान से देखना, बिना स्किप करे आगे नहीं फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको स्टार्टअप के लिए बहुत काम आ सकती है। सो डोंट मिस इट एंड वॉच इट टिल एंड। This will cover all your lessons of makeup taught in any academy. It's a free online course what I am providing you now, so you just need a pen and a book to note down the points which you think it will be helpful for you in your future. Okay, so let's start. What is color theory? In short, color theory is the art and the science of mixing colors. Color theory is mandatory, not optional. You can't even think to skip it and move further. For beginner and also for professional makeup artists, it's an understanding the basic of colors and how they work together. Then, why is color theory important? In beauty, color theory helps makeup artists and hair colorists make correction and harmonious choices. Viewers, it is really important to enhance the natural coloring of skin, eyes and lips of the client. Colors will also help you conceal and correct unwanted skin tones. Now, the color wheel is a simple way to look at the basic relationship between the 12 colors shown on the wheel. It also explains in simple terms how to mix colors to create new ones. Primary colors. These are original colors that cannot be created by mixing other colors. Red, yellow and blue. These are the primary colors. Now secondary colors. Created by mixing an equal amount of two primary colors. Red and blue, violet. Red and yellow create orange. Blue and yellow create green. Now, tertiary colors. Created by mixing a primary color with a secondary color in equal amount. Primary red and secondary orange create red, orange, tertiary. Primary red, violet secondary create red, violet, tertiary. Primary blue, secondary green create blue, green, tertiary. Primary blue, secondary violet create blue, violet, tertiary. Primary yellow, secondary green create yellow, green, tertiary. Yellow primary, orange secondary create yellow, orange, tertiary. So now comes color terminology. Value. The value of a color is measured by how much black, white or grey has been added to a color. Hue. It's a pure or original color. Okay. So tint, made by adding white to a pure hue. Example, if you have a purple and add white, you will get a lavender. So hue plus white equals to tint. Now comes shade. If you add black to a pure hue, example, if you have a bright red and add a touch of black to it, you will get a deeper, richer red. So black is added to create a shade. It's a deeper, more powerful. It can quickly muddy the color. Then comes tone. Now it is added to create a tone. A color may also be toned down by adding its complementary color together, like mixing. Okay? Okay, my viewers, now it comes warm and cool colors. If you want, you can note down it. Okay? So it will help you better in foundation and concealer color matching on different color skin tones. So, warm colors are bright, passionate and energetic and tend to the eye-popping colors inspired by earth and fire elements such as the sun, fire. Okay, so warm colors are typically red, orange and yellow. Warm, look for a golden tone. Now comes cool colors. It's give an
impression of calm and create a soothing impression. Elements such as the trees and the sea. Cool colors are typically green, blue, and purple. Okay, so cool look for a blue or green and sometimes pink tone. Remember this. Now, foundation selection is based on the undertone. Warm foundations work with warm undertones, and the same is true for cool undertones and cool foundation. Foundation must be selected according to value, light to dark. Remember. यहाँ मेरी वीडियो एंड अप करती हूँ गाइज। होप कि ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया हो, हर चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन किया हो। और अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वायरीज हो या कुछ उसमें समझ में नहीं आया या आगे कुछ पूछना है तो बेझिझक बेफिक्र आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डाल दूंगी। nabzi163.ns@gmail.com है। आप लोग बेफिक्र होके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि उसका आंसर दे सकूँ आप लोग को। अगर आप लोग को कुछ भी ऐसा रिलेटेड हो मेकअप के बारे में या आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे उस ईमेल आईडी पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। ओके, तो यहाँ अभी ये ख़त्म होता है। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सपोर्ट आप लोग का बहुत बहुत प्यार चाहिए, क्योंकि हम लोग सब यूट्यूबर्स बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, खास करके आप लोग के लिए बनाते हैं कि आप लोग को इससे कुछ सीखने मिले, नया मिले और हम लोग को भी अच्छा लगता है ये सब वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो अल्लाह हाफिज़।